आई मेट दिस गर्ल, ठीक है, आई मेट दिस गर्ल एंड आई रिमेम्बर कि मेरे अंदर है ना उस दिन वो वेद वाला कीड़ा चल रहा था कि थोड़ा तमाशा वाला कुछ करना है। तो आई रिमेम्बर कि आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज द पर्सन आई एम, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। मुझे बादलों पर कविता लिखनी है, उनके बारे में नहीं, उन पर चढ़कर, सफेद रुई में नीली स्याही भरकर। मुझे चांद का रंग बदलना है, कोई बनाओ इसे इंद्रधनुष सा रंगीला, क्या रोज वही सफेद और पीला। मुझे सुबह की ओढ़नी में रात की चांदनी को बुनना है, सुई में धागा पिरोकर, जाग रातों को दिन में सोकर। मुझे ट्रैफिक की धुन को कॉन्सर्ट में बजाना है, तब तक जब तक कोई ये ना कहे अरे ये किस बेसुरे का गाना है। मुझे बस कुछ नया बनाना है। हाँ माना ये जज्बा तो पुराना है, लेकिन क्या पता कहाँ ले जाए। कुछ नहीं तो मेरे लिए बस एक छोटी सी नई दुनिया बनाए। Welcome to Sentimental, a show that is all about feelings. आज हम बात करने वाले हैं about feeling creative. So, मैंने पोएट्री लिखना शुरू किया when I was about 10 or 11 years old. लेकिन उससे भी पहले से मुझे सिंगिंग, डांसिंग और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज का बहुत शौक था. Basically, anything that took me to the stage instantly became my favorite. And I realized कि हम सब लोग किसी ना किसी तरह से क्रिएटिव है. कुछ म्यूजिशियंस कोडिंग करते हैं, तो कुछ इंजीनियर्स गिटार बजाते हैं. And I guess we all can't help feeling creative from time to time. आज के एपिसोड के लिए I had the chance to talk to one of the most creative people I know about feeling creative. He is an actor, a poet, a writer, a dancer, sometimes sketches on social media for his friends, and so much more. So, welcome none other than Yaya Bhootwala, someone who is known to make his audience sentimental always. Yaya Bhootwala. Hi Yaya, how are you feeling today? Thank you so much. Thank you so much. Well, I'm not feeling very sentimental right now, but after that introduction, definitely yes. Yeah, I mean, you are someone who's known to give people the feels. तो आज मतलब तुम्हारी feelings भी पूछना बनता है. So glad to have you today. Thank you so much. I don't remember having such conversations before कि किसी ने मुझे पूछा कि आज तुम्हारी बातें करते. What are your feelings? Like, oh, thank you. That's Definitely, been a this while. show is going to be all about feelings. So I want to start because आज का हमारा जो discussion है, it's about feeling creative. So creativity का कीड़ा usually we say कि मतलब लोगों में बचपन से ही होता है. So we will start there only. That like, what about you? I know that you started writing pretty recently, but what was the most creative thing you did as a child? Yeah, I don't know. I think I've always been a person who wanted to collect memories. Like before the artistic space walked in my head, I was always a person who wanted to keep things close to myself. जैसे मुझे याद है कि स्कूल में ना हम एक बार क्या हुआ था कि हमने ना जो दरवाजे का लॉक था ना, एक गोदरेज का ये लॉक था, वो तोड़ दिया था. ठीक है, तो कोई टीचर वो पकड़ ना ले, लाइक बिकॉज इफ द प्रूफ इज फाउंड तो देन क्लास पर आ जाता कि हमने तोड़ा है. तो वो छुपाना था, तो मैंने अपनी बैग में रख दिया. ठीक है, तो I remember like even after like I took it home, I kept it in my drawer. I was like, अरे ये याद है. And like even when I was in college, I remember my bag used to be the most heaviest bag, not because I was carrying books, but because I was carrying like दूसरे लोगों का भी ऐसे थोड़ा जमेला होता था. All the sentiments actually come from the space कि I just wanted to keep things close to me. Like मुझे वो इमोशन हमेशा छोड़ना नहीं था. मुझे हमेशा ऐसा चाहिए था कि मैं किसी चीज को छू और उसके साथ कुछ चीज लाइक एक मेमोरी होनी चाहिए. So I think that and जहां तक बचपन की बात है, रिमेम्बर कि एक बार देखो मेन कीड़ा तो तब चढ़ा जब हम स्टेज पर चढ़ गए.
I think उसके बाद there was no turning back. Like Yeah, that I has was been the getting to that. Like now it must have changed so much, like creativity for you. So like now if you get an idea to write, then what is your first instinct when you get an idea? Is it like a, oh shit, I need to write this down abhi ke abhi? Yeah, what is it like? I think it's divided in two ways actually. कभी कभार है ना थॉट बहुत ज्यादा सुंदर लगता है तो आप लिख देना चाहते हो बट कभी कभार वो कॉम्प्लेक्स लगता है so like it's complicated but it's so beautiful that you start talking to the thought in a way like in your head you're starting to having a conversation with that whole idea कि अरे ये जो मैं सोच रहा हूँ ये इतना सुंदर क्यों है मेरे लिए और कहीं ना कहीं है ना वो बात करते करते में आप लिखना भूल जाते हो तो आप एक कॉन्वर्सेशन बहुत सुंदर बना लेते हो अपने दिमाग में बट यू डू नॉट गेट टू टाइप दैट डाउन एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर एग्जॉस्टेड बट यू नॉट डन एनीथिंग सो लाइक आई फील Yeah. लाइक दैट लॉट ऑफ टाइम्स मतलब बहुत सारी चीजें है ना ऐसे दिमाग में आती है मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक तरीके से वो कहानी बन जाती है और फिर वो चली जाती है एंड आई फील दैट वाज एन एक्सपीरियंस टू सो आई एम जस्ट कमिंग टू दैट fact के मतलब it's okay when sometimes it goes away but at least like you experienced it. Yeah, like I mean, so then what would you say is your relationship with creativity? Because kabhi kabhi हमारे लिए, like you said, it is you know, the whole day goes by, exhaustion हो जाता है, लेकिन you've not written anything. But sometimes it's also really fruitful, and other times Right. it's frustrating also. So like, what is your relationship like for? I mean, in your experience? यार आई थिंक माई रिलेशनशिप लाइक इज इम्तियाज अली की फिल्में कैसे होती है एक भटका हुआ लड़का होता है और एक लड़की होती है जो उसे रास्ते पर ला सकती है ना लाइक शी इज सॉर्ट ऑफ इन हर ओन वे गाइड्स द गाय बैक to Yeah. towards his goal. I think that is my relationship with creativity. I'm a very lost person. Like the only thing I have is an ambition. उसके अलावा मैं बहुत अंधा हूँ मतलब मुझे उसके उसके अलावा कुछ पता नहीं यू नो इट्स लाइक व्हेन यू हैव गोल्ड इन योर हैंड बट यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट so my ambition is my goal but I have no idea what I want to do with it the creativity Wow. sort of guides me Yeah, plus this is so like like this is the most romantic definition for creativity. Like इतना creativity को कभी romanticize होते हुए सुना नहीं है मैंने. So that's pretty अरे interesting. तुम But रुको ना यार मैं रोमांटिसाइज मतलब तुम कुछ भी बताओ मैं करके दिखाता रोमांटिसाइज तुम बताओ तुम exactly, like this time, you know, we discussed this and I was like, you know, let's not talk about love, let's talk about something else. And that's like, but राइट you know, when like love is our like love and compassion, when that's a core part of who you are, it sort of enters every sphere of your life. So that's amazing. But एंड coming आई back थिंक to इट्स what you said इम्पोर्टेंट about pura din nikal या jana and not writing anything, then what do you think about like, I mean, so when you get ideas, sometimes do you just get lazy? मतलब ऐसे आलस आ जाती है और नहीं लिखा, you just let it be. मतलब you are feeling creative, but you don't do anything about it. Like, does that ever happen? नहीं यार I like that used to happen a lot like I'll say that I am in a space जहाँ पर I'm trying कि वो जितना कम हो सके ना मेरी लाइफ में अब उतना बेहतर है because I don't want anything to go waste like either I want to have a conversation with it and learn something new even if I've not typed it down or either I want to type it down like I want the world to see it but in no way do I want it just to just go away मतलब मैं अपने आलस के चक्कर में ना एक experience को नहीं जाने देना चाहता so like whenever I get like a thought I'm just like एक मिनट अभी कॉन्वर्जेशन हो गया अब कुछ होगा सो लाइक यू ऑलवेज हैव द फोन अराउंड विथ यू राइट तो मतलब इफ यू फाइंड इट्स अ सिंपल थॉट व्हेन आई से अ सिंपल थॉट इट्स लाइक आपको पता है कि वो अपने तरीके में कॉम्प्लेक्स है बट आपको उसको ज्यादा सवाल नहीं पूछना पड़ता लाइक यू डोंट हैव टू क्वेश्चन इट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ योर हार्ट इज इट कमिंग फ्रॉम राइट और जब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जैसे अगर मैं अगर कभी कुछ डार्क लिख देता हूँ इन माई हेड तो आई एम लाइक ये कहाँ से आ रहा है लाइक वेयर इज द ग्रोथ ऑफ इट हैपनिंग फ्रॉम लाइक फिर मुझे वो सब समझने की कोशिश करना है सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ थ्रू द थिंग्स दैट कम टू माई हेड सो So या would you say then कि मतलब जो ये हमारे अंदर जो creativity की feeling आती है उस it's like a self reflection only मतलब ये जो हम मतलब for everyone like जैसे हम तो writing करते तो हमारे लिए तो major self reflection हो जाता है लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब they explore creativity through music or dance. Do you think that also kind of like makes them think about like okay where is this like किसी musician के लिए where is this tune coming from? If it's a very sad tune or something like that, do you think
it's the case I with think everyone. definitely. डेफिनेटली विच इज वाई आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए उसके अंदर इतने बाइफोकेशंस क्यों होते हैं. इट्स बिकॉज समवन हैज रिलेटेड टू समथिंग मच मोर क्लोजली देन टू द अदर थिंग्स. जैसे डांस में कोई अगर कंटेम्पररी करता है वो कंटेम्पररी क्यों कर रहा है. ही फील्स द मोस्ट फ्री व्हेन ही इज डांसिंग इन द कंटेम्पररी स्टाइल. अभी Hmm. अगर उसे जैज में डाल दिया जाए तो वो अपने आप को उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने इमोशंस को उसमें आजाद नहीं कर पाएगा. वाइस वर्सा, कोई अगर जैज का डांसर है तो वो कंटेम्पररी में बहुत मुश्किल से फिट हो पाता है. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग योर स्पेस. Right. मेजरली इट्स जैसे सिंगर्स होते हैं, आप किसी भी सिंगर को बोलो वो गा सकता है. मतलब समवन कैन सिंग अ सैड सॉन्ग, समवन कैन आल्सो सिंग द लव सॉन्ग एंड देन गेटिंग समथिंग. दे कैन आल्सो सिंग अ डार्क सॉन्ग के मतलब दुनिया खत्म हो रही है. उन्होंने इतना रियाज किया है कि दे कैन वर्क ऑन ऑल ऑफ दी. बट एक आपको उनका एक ये पैच मिलेगा जहां पर ऐसा लगता है कि आई थिंक इज द मोस्ट ऑनेस्ट हियर. जैसे अरिजीत के कोई भी आप लव सॉन्ग सुनो तो ऐसा लगता है कि इज द मोस्ट ऑनेस्ट है. वो ऑटोमेटिकली अंदर से आता है. तो आई थिंक इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, इट्स अबाउट थिंग्स दैट यू हैव मोस्ट फेथ इन. Hmm. So can you like tell us, I mean, one story or an incident where, something really crazy happened just because you were feeling creative? Like you wrote something because I know that, even when it comes, like you are not just a writer, you are an actor. You also Yeah. like dancing. So, I mean, there are like a lot of things. So then anything like crazy that's happened out of creativity for you? यार तो I was in Dubai last year. Like, I feel very lucky that way. मेरा एक शो दुबई में जब हुआ था तो जब दुबई में था तो आई रिमेम्बर कि आई हैड दिस वन डे व्हेन आई हैड प्लान्ड लाइक नथिंग. लाइक जो बाकी सारे दिन थे ना मैंने प्लान किए थे कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, एक दिन जिनके वहां पे रुका था तो उनके साथ प्लान्स बनाए थे. बट वन डे आई हैड लेफ्ट के कुछ भी कर लेंगे, देख लेंगे. So I went to Dubai Mall that day and I remember कि I met this girl. ठीक है, I met this girl and I remember कि मेरे अंदर है ना उस दिन वो वेद वाला कीड़ा चल रहा था कि थोड़ा तमाशा वाला कुछ करना है. तो I remember कि I did not introduce myself as the person I am. I introduced myself as something completely different. Okay. Just because I wanted to live that. I just wanted to have that feel कि मतलब वो क्या होता है जब आप कोई और बन रहे हो, वो इंसान आपको किस तरीके से देख रहा है, how much of you is she believing in. And I loved it when she was believing everything that I was saying, because for her it was not acting, it was हाँ ये real आदमी है. So like throughout that conversation that we had, throughout that time period, my learning was just as a creative person was कि मतलब I was just convincing myself that I can be so much more than just what I am, like what I reflect on a normal basis. So I think that and I remember we did not exchange numbers. वही जैसे फिल्म में जैसे करना था ना बिल्कुल वैसे ही किया है तो कि बस अब मतलब नंबर इंतजार है exchange. कब वो इंडिया मुंबई आ रही है और कब शी शोज अप एट योर डोर. नहीं नहीं. I don't बट think नहीं मैंने ऐसा होगा ना. कोई भी यू चीज के लिए सो ओके, कैन यू टेल अस द नेम यू गेव हर और डू यू थिंक दैट विल रिवील टू मच? I think, see, it was a very, very common name. I said, my name is Rahul, अच्छा, but I introduced myself as a rapper. नाम So, तो like, सुना as होगा. Rahul the rapper. अच्छा. राहुल द रैपर, डिड शी मेक यू रैप? No, no, no. I was just चलो, grateful she did उतना not. क्रिएटिव नहीं हुए मतलब तुम लेकिन हम दिस तो इज ऐसे क्रेजी. तुरंत ऑन स्पॉट कैसे निकालता हूँ, लग हाँ. जाते थे. मतलब ये फ्री स्टाइलिंग वगैरह तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता. बट दिस इज हाँ. रियली फैसिनेटिंग. आई मीन दिस इज लाइक implementing creativity or experimenting with creativity in real time. It's like improvising जब आप actual में करते हो, like with people. So that's crazy. I have one last question for you, Yaya. But Yes, before please. that, if you want to say something just about the feeling of creativity or just anything that you want to say to people, you can, and then maybe I can, like, मतलब creativity के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो, and then I'll ask you my last question. आई थिंक क्रिएटिविटी को है ना हम बहुत तरीके से लाइक आई थिंक एज आर्टिस्ट हमें लगता है कि वी आर वेरी फ्री टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, बट एक्चुअली वी आल्सो रेस्ट्रिक्ट आवर क्रिएटिविटी. मतलब हमें लगता है कि इफ वन थिंग इज वर्किंग फॉर अस वी सॉर्ट ऑफ कीप चर्निंग आउट मोर ऑफ दैट.
Like as artist, when you pick up something, I feel you can explore everything around it. Like अगर आप writer हो, so you could try writing a book someday. You could try creating anything that's related to writing. Advertisements कह लो, series कह लो, ये सब चीज में experiment करो और अलग अलग चीजें के experiment करो. Like if you are a love writer somewhere, just be something else otherwise. तो उससे क्या होता है, I feel that you give yourself a space to express more than what you are. Just a minute, हाँ. तो I don't know if it happens with you, because I feel that a lot of time, because हर इंसान में सिर्फ we are not one shade of color, right? We are a lot of shades of color. Yeah. That means we can express so many things. There is a spectrum of emotions that we do not talk about. So I feel just giving your space, like giving yourself that space, and not thinking कि लोग क्या कहेंगे, how will people react to this new thing that I'm doing. It doesn't matter. Not every shade of you is to be loved. Some things are questionable about you. You have to accept that. This actually brings me to my final question, and what a great segue. Because, like you said, that we have a spectrum of emotions, and Right. I think that was the reason for, like, talking about being sentimental also for me, because usually it's sort of looked down upon when somebody is too sentimental, or that's also why people feel sort of shy to talk about their feelings. Real life में भी ये बहुत होता है कि people are not able to express their feelings. So, like, what is the one thing, like, of course, as writers, our writing is the biggest outlet for us to express our emotions. But anything that's very specific to you, what is that one thing that you do so that, like, which can actually help people sort of embrace their emotions, accept those emotions and be able to talk about them? Yeah, I think I've evolved in a way जहाँ पर my way of expression was very toxic before. The thing was कि जब मुझे कोई चीज बुरी लग जाती थी, या मतलब वो I would feel really bad about it. I wouldn't tell the person ever. Like मैं किसी से कुछ नहीं बताता. I would just wait to come back home and I'd punch walls. And I did that for a really, really long time. And then, like, I started dating this one person, whom I'm not dating now. So when we were together, like, there was this one time when, like, it came out in front of her, like, गलती से वो छूट गया. Like, one punch just landed on the cupboard, उसके सामने, and I didn't mean to do that. And she just asked me why. And I had no answer for it, because I felt that all my life, just punching a wall just made me feel calmer. And I don't think that's something I could do for the rest of my life. It doesn't make sense, right? Because ऐसा नहीं है कि मेरी problem solve हो जाती है एक मुक्का मारने से, वो भी एक दीवार को. Not that you should hit anyone, but in general also. So I just started feeling that maybe I should start expressing in a way, and that gave space for conversation to be, like, not just the conversations of like happy go lucky, or I want to do things for you, like मैं चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा. Like these are the common things, like these are ऊपर ऊपर की बातें जो हम कर लेते हैं. But getting deep inside, like, what is your fear, what about you do you feel is so dark that you don't want to explore and talk about with people. I think when I got in those conversations with someone, I started feeling comfortable with myself. I started feeling that I'm not a bad person per se, क्योंकि एज ह्यूमंस हम बहुत कुछ सोचते हैं जो कि हमें हमारी नजरों में गिरा देता है. लाइक इवन इट्स नॉट इवन अबाउट डूइंग इट, इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग दैट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक, oh shit, I thought about this, how bad a human am I. You start But judging you yourself. find a, yeah, and you talk to that person and you realize everyone has something like this. Like, everyone is not an asshole, but everyone is thinking about some things like this that makes them feel really bad in their own eyes. And maybe we just have to own it, say that, yeah, I thought about it, it's wrong, and I want to grow beyond it. And I think that's how growth happens. Definitely. That's actually really beautiful and insightful. Thank you for sharing that with us, Yaya. I think, and also thank you for just being, being yourself, being vulnerable. I think that's the most courageous thing to do, and that's what takes most time for most people, to just be able to accept their emotions and accept themselves for who they are. So I think on that beautiful note, thank you so much, Yaya, for being with us.
and for sharing all your feelings and all your thoughts about feeling creative. And this was a lot of fun. Thank you so much. There is a quote that goes something like this: feeling creative is not about waiting for that perfect moment to do the things that you love. Instead, it's about creating that perfect moment out of the ordinary ones. So seize that moment and do things that you feel inspired to do, or just things that make you happy, because that's what feeling creative is. It's doing things that make you happy. And it doesn't matter कि बाहर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा skilled है, जो या आपसे ज्यादा talented है, because that's not what feeling creative is about. Creativity is just about expressing yourself, and that's exactly what a sentimental person would do. So अगर आप मेरी तरह sentimental है, then that's all that really matters. Doing something that makes you happy. So that's all from my side, you guys. If you enjoyed this episode, if you enjoyed my conversation with Yaya, then please click the like button. Please subscribe to the channel and share this video and like this video and send it to someone who relates with it. And that's all. I will keep bringing new episodes. And remember, feeling is healing.